गुड इवनिंग बेटा। Let us try to do some questions based on the J means grant is better. So the first question, identify pairs of physical quantity that have same dimensions. I hope you can do this question. The physical quantity, like what is meant by gradient beta? Anyone? Anything divided by length is known as gradient, like velocity divided by length. Velocity dimension is Lt power minus 1 divided by dimension of L is also L. So this one is T power minus 1. Okay. Then decay constant. Decay constant is nothing but how much for me? Lambda is equals to 1 by n into your dn divided by your dt. So this one is number will get cancelled. So it is 1 by your t. That is nothing but t power minus 1. So first option will be the answer for this. Clear for everyone? So next question try kariye koi. The distance between the sun and earth. The distance between sun and earth is r. The duration of the year, if the distance between sun and earth becomes 3r, will be. Anyone? Kepler's law लगाना है बेटा. Simple case है. जिस नेटिव अप्लाई दिया हो Kepler's law. I hope you remember the Kepler's law. Square of the time period is directly proportional to your r cube, isn't it? So I can write that t is directly proportional to r power of 3 by 2. So I can write here t dash is equals to your capital T into this one is radius 3r divided by r to the power of your 3 by 2. So this value will come out for me 3 root 3 times of your t. This will be the answer for this. Okay. Next one. The stone of mass m is tied to the string is being held in a vertical circle with uniform speed. The tension in the string will be equal to your how much? Can anyone? It's same throughout the motion. The minimum at the highest position of the circular path, the minimum at the lowest position of the circular path, and minimum when the rope is at the horizontal position part. Very simple and basic question is circular motion ka. The stone of mass m is being tied to a string is being held in a vertical circle with uniform speed. The tension will be minimum at the highest position in the circular path. I hope you remember this one when a particle is moving in a circular path, isn't it? So here the weight will be equal to mg, the tension will be equal to t. This will be equal to t minus mg is equals to mv square divided by r, isn't it? If it is somewhere in the upward, somewhere here right now, the weight of the body is mg downward direction. Tension in the string is also t. So this will be t plus of your mg is equals to mv square divided by r, isn't it? The stone of mass m is tied to the string is being held in a vertical circle with uniform speed. The tension in the string is minimum at the highest position and same throughout the motion. The भी कितना हो जाएगा? T is equals to mv square divided by r minus mg हो जाएगा. और यहाँ पर टेंशन will be T is equals to mv square divided by r plus mg हो जाएगा. यानी lowest position पे maximum होगा, highest position पे minimum होगा. So the best answer I can write for this one is 2. Minimum at the highest position of your circular path. Next one. Can anyone? Two identical charged particles each having a mass of 10 gram and charge 2.0 into 10 power minus 7 coulomb are placed on a horizontal table with a separation of L between them, such that they stay in limited equilibrium if coefficient of friction between the particle and the table is 0.25. Find the value of L. Regular question. Anyone? Two identical particles. This one is one identical particle. This is another particle having a mass of your 10 gram and a charge of. तो इन दोनों के बीच में इसने मास दे रखा है. Mass is equals to 10g
and a charge is given for me 2 into 10 power minus 7 are placed on an horizontal table. Okay, this is your horizontal table. So this is kept on an horizontal table. ऐसा कुछ, तो इसको मैं थोड़ा मोटा कर लेता हूँ, तो यहाँ पर इस तरह से with the separation of L, तो इन दोनों के बीच की दूरी जो है ना, this one is capital L. Between them such that they stay in immediate equilibrium if the coefficient of friction between the two particles is 0.2, यानी mu भी दे रखा है 0.25. Find the value of your, I hope directly question लिख सकते हैं. पहले इन दोनों के बीच में तो electrostatic force होगा, so that F value will be equal to your 1 by 4 pi epsilon naught into q square divided by L square. और इसमें जो फ्रिक्शन आ रहा है ना, इसकी वजह से राइट नाउ, सो वन फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और लिमिटिंग फोर्स की वजह से म्यू इनटू योर mg. तो एक तो फ्रिक्शन हो गया, दिस फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू इनटू n, एन वैल्यू विल बी इक्वल टू m इनटू g. अभी इक्विलिब्रियम में रहने की वजह से, स्टेइंग इन इक्विलिब्रियम बोल रहा है, तो कैपिटल F विल बी इक्वल टू स्मॉल f. तो इसको मैं k ले रहा हूँ बेसिकली, सो दिस वैल्यू विल बी k इनटू q स्क्वायर डिवाइडेड बाय l स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ योर mg. So the value of L पूछ रहा है ना, everything is given for me, so you can calculate from that one. I'm leaving the calculation for you. So L value will be equal to K into Q square divided by mu times of your M into G, और ये हो जाएगा अंडर रूट के, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ योर K divided by mu times of your mg into Q. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, that will give me the answer. हमें क्लियर? एक बार देख लीजिए बेटा. ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट वाला देखिए जल्दी से. Magnification produced with an astronomical telescope for the normal adjustment is given as of your 10. ठीक है ना, and the length of the telescope is also given for me. The length of the telescope is 1.1 meter. The magnification when the image has been formed at the least distant of your distinct vision will be equal to your how much? Can anyone better? Astronomical telescope का normal adjustment का फॉर्मूला है. मैग्निफिकेशन कितना देखो, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज, यानी m की वैल्यू दे रखा है, m वैल्यू इज इक्वल्स टू योर 10, और लेंथ दे रखा है 1.1 मीटर बेटा, यानी ये आप सेंटीमीटर में ले लोगे तो 110 सेंटीमीटर हो जाएगा. Magnification when the image is formed at least distance of distinct image. So when the image is formed at least distant of distinct image, इसका magnification को फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था, m is equals to focal length of objective divided by focal length of eyepiece into 1 plus fe divided by capital. और इसमें लेंथ दे रखा है, और लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप आप लोग को मालूम है, L वैल्यू विल बी इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ योर eyepiece, and total length is given as 110, that is equals to your f naught plus of your fe. तो अगर मैग्निफिकेशन ले रहा हूं मैं, यहाँ पर देखो इसमें से मैं लिख सकता हूँ, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है मेरे पास ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय इमेज, फोकल लेंथ ऑफ इमेज, एंड दिस इज 10, सो दिस इज इक्वल्स टू f नॉट डिवाइडेड बाय fe. तो f नॉट की वैल्यू हो गई 10 टाइम्स ऑफ fe. इस वैल्यू को लेके जाके इसमें डाल दीजिए आप. यहाँ पर अगर मैं इसको डाल रहा हूँ तो f नॉट की वैल्यू हो गई 10 टाइम्स ऑफ fe प्लस दिस वन इज ऑल्सो योर fe. ठीक है ना, तो दिस वैल्यू विल बिकम हाउ मच, 11 टाइम्स ऑफ fe, दिस इज 110. तो 11 1 जा 11 10 जा, यानी फोकल लेंथ ऑफ आईपीस विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा, 10 सेंटीमीटर हो गया. और फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कितना बन जाएगा अभी बताइए, फोकल लेंथ ऑफ योर ऑब्जेक्टिव विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव विल बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. Isn't it? तो अब ये हो गया मेरे पास सिंप्लीफिकेशन, और d की वैल्यू मालूम है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन में 25 होती है, तो f नॉट की वैल्यू हो गई मेरे पास यहाँ पर कितना बेटा, 100 डिवाइडेड बाय fe की वैल्यू कितनी है 10 into 1 प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज 10 डिवाइडेड बाय 25. इसको कर लीजिए, तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 10 into 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 25. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दैट विल गिव मी द आंसर फॉर दैट. ठीक है ना, सिंपल था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो.
two massless springs with a spring constant 2k and 2k carry 50 gram and 100 gram masses at their free ends. These two masses oscillates vertically such that their maximum velocities are equal. तो क्या बोल रहा है? Maximum velocities are equal बोल रहा है. The ratio of their respective amplitudes will be, देखो, तो V max का फॉर्मूला होता है एक्चुअली ये इंटू ओमेगा. तो दोनों मैक्सिमम वेलोसिटीज आर इक्वल है, तो a1 ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू a2 ओमेगा 2 के बराबर. द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स पूछ रहा है, तो a1 बाई a2 विल बी इक्वल टू ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई ओमेगा 1. हमें क्लियर? हमें क्लियर? ठीक है ना? तब सब कुछ दे रखा है बेसिकली. ओमेगा को कैसे लिख सकते हैं बेटा अपन? हाउ डू राइट द वैल्यू ऑफ योर ओमेगा? आ गया? यस बेटा. f is equals to k into x के अंदर f is equals to k वैल्यू कितनी होती है? m into ओमेगा स्क्वायर into x इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया मेरे पास k की वैल्यू, यानी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ योर k डिवाइडेड बाई m. तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर अंडर रूट ऑफ योर a बन जाएगा k2 के लिए, दिस वैल्यू विल बिकम फॉर मी k2 डिवाइडेड बाई m2 इंटू यहाँ पर बन जाएगा m1 डिवाइडेड बाई k1. ठीक है ना? तो प्रॉब्लम में क्या दे रखा? दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट 2k है, तो ये हो गया 2k और एक का मास है 50 ग्राम्स और एक का है 100 ग्राम्स डिवाइडेड बाई 2k भी कैंसिल, a0 will also get 5 ones are 5 twos are, and this value will be equal to how much for me? Root 2. a1 and amplitude will be equal to how much for me? कितना बेटा? बराबर है ना? 2k will get cancelled, 0 5 ones are 5 twos are, so this will be equal to root 2. The ratio of the respective amplitudes will be equal to your how much? 50 gram, 100 gram. They oscillate such that vertical maximum velocities are equal. तो बराबर ही आया ना? गड़बड़ दिख रहा है इसमें. टू masses of spring constant 2k 50 ग्राम एंड 100 ग्राम से वैसे भी वेलोसिटी सेम बोला है, तो k इज इक्वल टू अंडर रूट हो गया 2k तो ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई ये हो गया 100 ग्राम्स यानी 1000. वैसे भी रेशियो में 1000 कैंसिल हो जाएगा ना बेटा, ओमेगा 2 की भी वैल्यू. पता नहीं क्वेश्चन क्या हो गया. सही है, सही तो लिखा मैंने. The two springs oscillate together such that their maximum velocities are equal to the ratio of their respective two massless springs with the spring constants of 2k and 2k carries the 50 grams and 100 grams of the masses. Then the ratio of their respective velocities will be equal to your how much? Omega is equals to under root of your k by m. पता नहीं मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें. पता नहीं प्रॉब्लम में कुछ गड़बड़ है शायद. ठीक, चल दे. नेक्स्ट क्वेश्चन.
What will be the most suitable combination of three resistors? 2 ohms, 3 or 4 ohms, and C की value 6 ohm है, such that their value is 22 divided by 3 and is equivalent resistance of combination में equivalent इतना आना चाहिए. अगर मैं इन दोनों को ए और बी को पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन में ले लेता हूँ, यानी 4 + 2 ये हो गया 6 एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ए एंड बी एंड सी के साथ सीरीज में कर लो. हाँ, अगर ए एंड बी सी को अगर मैं कर रहा हूँ नहीं होगा. 22/3 आना चाहिए. आ रहा है क्या? नहीं होगा. तो पहले क्या करो, इन दोनों को आप पैरेलल में कर लो, तो ये बन जाएगा 6 ओम और इसके साथ ये सीरीज में कर लो और एक को 6 ओम को आप सीरीज में कर लो. तो ये बन जाएगा 6 × 6 डिवाइडेड बाय 6 + 6, isn't it? So इक्विवेलेंट पूछ रहा है ना, आर इक्विवेलेंट 36 डिवाइडेड बाय 12 आ गया. नहीं होगा. क्या करो, ए एंड बी शुड बी कनेक्टेड इन योर पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल मतलब ये हो जाएगा 2 × 4 डिवाइडेड बाय 2 + 4. तो 2 साइड्स में सीरीज में नहीं होगा, पैरेलल में ले लो पहले. तो 6 दिस विल बी 4/3 और उसके साथ सीरीज में कर लो या 4/3 + 6. ओके, इसका एलसीएम ले लीजिए 3. दिस विल बी 4, दिस विल बी 18. हाँ, 22/3 सेकंड ऑप्शन आ जाएगा. इजी क्वेश्चन. ठीक है, चलो next one. Find the equivalent resistance between the points A and B for the circuit shown in the diagram. I hope you can do this question directly. A proton, a deuteron, and alpha particle with same kinetic energy enters into uniform magnetic field. The ratio of the radii भी कर लोगे आप लोग, सीधा क्वेश्चन है. Given below are two statements, ये theory based है, आप लोग ट्राई कर लीजिए. Potential energy as a function of R is given as U is equals to A/10 R to the power of 10 minus B R to the power of 5. R is interdynamic distance, the equilibrium distance between the two. एक करो, आप क्या करो, डायरेक्टली फोर्स का फॉर्मूला लीजिए, F is equals to minus of DO divided by DR और इसको आप इक्वेट कर लीजिए 0 से. So this is D, A की वैल्यू ये R power -10, so this will be your minus of your B into your R power -5 divided by DR करो और इसको इक्वेट कर लो 0 से. ठीक है ना. Then the equilibrium position R की वैल्यू आ जाएगी इसमें से. I hope you can do that question. ठीक है ना. नेक्स्ट वन देख लीजिए. An object of mass 5 kg is thrown vertically upward from the ground. The air resistance produces a constant retardation force of 10 Newton throughout the motion. The ratio of the time of ascent to the time of descent will be equal to or how much? ये थोड़ा बढ़िया वाला क्वेश्चन है. I hope you can do this question also. Try करो. An object of mass 5 kg इस मास कितना है मेरे पास 5 kg थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. इसको हम लोग ने ऊपर फेंका away from the ground and the air resistance produces a constant retarding force of 10 न्यूटन. अच्छा, रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है इस पे 10 न्यूटन, तो फोर्स भी नीचे लग रहा है और वेट ऑफ द बॉडी mg भी नीचे लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? F net is equals to एयर के वजह से रेसिस्टेंस प्लस m into g. एक्सेलरेशन निकालो, m into your acceleration of this body will be equal to your force resistance is 10 plus of your, ये बन गया मेरे पास मास कितना दे रखा है 5 into g, g की वैल्यू हो गई 10, 50 plus 160, mass is 5 into your a, so a is equals to 60 divided by 5. ठीक है ना. ये कितना आ रहा है 512 यानी 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन. और
टाइम ऑफ ऊपर जाते से टाइम पे, जब नीचे आते से टाइम पे, जब बॉडी नीचे आ रही है तो इस पे तो वेट ऑफ द बॉडी विल बी mg in the downward direction. The object of 5 kg is thrown vertically upwards. The air resistance produces a constant retarding force of 10 Newton throughout the motion. यानी जब ऊपर जा रही है तो रेसिस्टिव फोर्स वाज बीन एक्टिंग इन द डाउनवर्ड, जब नीचे जा रही है तो रेसिस्टेंस फोर्स विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन रिटार्डिंग थ्रू आउट द मोशन. कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, इस पे ऑपोजिट लग रहा है, वो ऊपर जा रहा था नीचे लग रहा था, ये नीचे जा रहा था इस पे ऊपर लगेगा, तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा नीचे, तो रेसिस्टेंस, तो ये नीचे जा रहा है, mg माइनस ऑफ योर f रेसिस्टेंस विल बी इक्वल टू योर m इंटू योर, ये निकाल सकता हूँ. तो मास हो गया 5, g की वैल्यू 10, रेसिस्टेंस फोर्स इज 10, दैट इज इक्वल्स टू 5 इनटू योर e. 50 minus 10 is equals to 5a, that is 40 is equals to 5a. तो एक्सेलरेशन आ गया 5 8 से 40 यानी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, तो टाइम ऑफ एसेंट कितना हो जाएगा बेटा? टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू प्रोजेक्टेड बाय यू बाय एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन कितना है मेरे पास? 12. ठीक है ना, और कितनी मैक्सिमम हाइट जा सकती है बेटा यहाँ से यहाँ तक मुझे पता नहीं, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा रहा हूँ h max. तो h max विल बी इक्वल टू योर u square divided by 2 into acceleration. Acceleration is right now for me 12, and this is u square divided by 2 into 12 is 24. तो ऊपर जितना जाएगा फिर नीचे भी उतना ही आएगा ना बेटा. तो टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला लगा लीजिए अब, s is equals to ut plus half of your a into t square कर लीजिए. ठीक है ना, तो डिस्टेंस कितना हो गया? u square divided by 24. इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो 0 प्लस हाफ, डाउन में एक्सेलरेशन कितना आ गया? 8 into your t square. ठीक है ना, तो ये हो जाएगा मेरे पास u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24, 2 1 जा 2 4 जा, ये हो जाएगा 4 इंटू टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16, यहाँ पर हो गया 6, 4 to 8, ये हो गया 9, यानी t की वैल्यू हो गई u डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 96. दिस इज टाइम ऑफ डिसेंट, ये हो गया टाइम ऑफ एसेंट. अब इन दोनों का रेशियो लेना है, ठीक है. अब इन दोनों के रेशियो ले लीजिए. पूछ रहा क्या है, द प्रॉब्लम क्या पूछ रहा था? द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ एसेंट. ओके, टाइम ऑफ एसेंट लिख लेता हूं मैं पहले. टाइम ऑफ एसेंट डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ डिसेंट. टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट कितना है बेटा? u डिवाइडेड बाय 12 है, डिवाइडेड बाय दिस इज u डिवाइडेड बाय रूट 96 है. u और u चले गए, ठीक है ना, तो ये वैल्यू कितना बच गया बेटा? दिस इज योर 12 एंड ये हो गया रूट 96 डिवाइडेड बाय 12. रूट 96 कैसे लिख सकता हूँ बेटा मैं? 2 इंटू रूट 24 लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई दिस वन इज राइट नाउ फॉर मी 12. ये कितना हो जाएगा? 12 कैसे लिख सकता हूँ? रूट 12 इंटू रूट 12 लिख लो, लिख सकता हूँ ना? हाँ, दिस इज रूट 12 इंटू योर रूट 12. ठीक है ना, तो ये बन जाएगा रूट 6 और ये बन जाएगा रूट में से रूट जाएगा तो यहाँ पर बनेगा रूट 2. हाँ, तो दिस वैल्यू विल बिकम फॉर मी 2 डिवाइडेड बाय रूट 6, यानी दिस विल बी 2 इंटू रूट 3 आ जाएगा बेटा. कैलकुलेशन देख लो आप लोग. सो दैट विल बी 2 इंटू 2 इज 4, दैट इज नथिंग बट रूट 2. तो ये हो गया रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 3. ठीक है, है ऑप्शन रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 3, सेकंड ऑप्शन वाला आंसर. ठीक है ना, क्लियर? चलिए, a flywheel is accelerated uniformly from rest and rotates through 5 radians in the first 5 seconds. In the first second, the angle rotated by the flywheel in the next second will be. देख लीजिए एक बार. A flywheel is accelerated. इसको मैं ड्रॉ बैठा हूँ, ठीक है. The flywheel is accelerated uniformly from rest, rotates through 5 radians. Okay, theta is equals to omega naught into theta plus half into alpha into t square का फॉर्मूला लगा लीजिए. फर्स्ट सेकंड के लिए यानी t is equals to 1 के लिए थीटा कितना रोटेट हो रही है? 5 रेडियन. सो 5 और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो ये तो 0 बन जाएगी. सो इट इज हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर. टी की वैल्यू 1 हो गई तो दिस इज हाफ इंटू अल्फा.
5 2s are 10. 10 will be equal to alpha. Alpha is equals to your 10 radians per second square. Angle rotated by the wheel in the next second बोल रहा है, यानी theta 2 is equals to your, this value will be equal to your, how much for me, half into alpha into t square. Theta 2 will be equal to half into alpha value is 10 into next 2 square means 4. 4 ones are 4 twos are, that means this one is 20. Theta 2 is equals to 20 radians in next 2 seconds. Is asking for next second. Next second means theta 2 minus theta 1. That is 20 minus, first one is how many radians beta? 5 radians. So it should be 15 radians. So second option would be the answer. Okay, simple question था. ठीक है, देख लीजिए. इसके बाद next one. A 100 gram of iron nail is hit by a 1.5 kg hammer striking at a velocity of 60 meter per second. What will be the rise in temperature of the nail if 1/4 of the energy of the hammer goes into the heating of the nail? What formula you can use better? 100 gram of ice, 100 gram of iron nail. इसको आप क्या करो, एनर्जी का जो फॉर्मूला है ना, एम एस इंटू डेल्टा टीटा इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट कर लीजिए. क्या पूछ रहा है? व्हाट विल बी द राइज इन टेम्परेचर? डेल्टा टीटा ये पूछ रहा है ना बेटा. तो मास दे रखा है अपने को 100 ग्राम्स, तो 100 इंटू 10 पावर -3. स्पेसिफिक हीट इज राइट नाउ फॉर मी 0.42, तो हो गया ये 4420 हो जाएगा ऐसे सिस्टम में, इंटू टेम्परेचर डेल्टा टीटा दैट इज इक्वल्स टू 1/4 यानी 1/4 इंटू half into mass is 1.5 kg into velocity is 60 into 60. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, डेल्टा थीटा. आई एम गिविंग द कैलकुलेशन फॉर यू. ठीक है ना. नेक्स्ट वन. If the charge on the capacitor is increased by 2 coulomb, the energy stored in it increases by 44%. The original charge on the capacitor will be equal to your how much for? Sure. Original charge. If the charge on the capacitor is increased by 2 coulomb. Okay. So the energy stored in it is increasing by 44%. Okay, I don't know the charge, so I'm taking Q1 and Q2. Then I'll try to simplify it. Energy का formula लगा लेते हैं. U is equals to Q square divided by 2C. ठीक है ना. तो अब इसका रेशियो ले लीजिए, U1 divided by U2 is equals to this value will be equal to Q2 divided by Q1 का whole square. ठीक है ना. तो परसेंटेज में लिख लीजिए आप, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, U2 divided by U1 -1 is equals to U1 by U2 that one था. तो ये बन जाएगा मेरे पास, इसका उल्टा लिख रहा हूँ ना बेटा, तो U1 by U2, तो ये कितना बन जाएगा बेटा, Q1 divided by Q2 -1. तो परसेंटेज में ले लेके कर लीजिए बेटा. आई होप यू कैन डू राइट नाउ. U2 minus U1 divided by your U1 is equals to, ये बन जाएगा मेरे पास Q1 divided by Q2 -1. तो ये इंक्रीज करा कितना, by 144%, यानी ये हो गया 44 is equals to Q1 divided by Q2 होल स्क्वायर है बेटा ये पूरा. ठीक है ना. दिस इज स्क्वायर, सॉरी दिस इज ऑल्सो स्क्वायर -1. ठीक है, इंटू 100. तो इसमें से आपको Q1 by Q2 की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है ना. Once you will get the value of your Q1 by your Q2 from this relation, then use the relation of your, so you will be getting the relation of Q1 Q2. And उसने बोला कि प्रॉब्लम में गिवन दे रखा है, it is increased by 2 coulomb, यानी Q2 minus Q1 is equals to 2 coulomb दे रखा है. ठीक है ना. यहाँ पर जो भी वैल्यू आ रहा है इसमें डाल के सिंप्लीफाई कर लीजिए, दैट विल गिव द आंसर. ठीक है ना. चलिए, आई होप यू कैन डू दैट वन. दैट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन. सिर्फ कैलकुलेशन कर लेना. ठीक है. ओके. Next one. A long cylindrical volume contains a uniformly distributed charge of density rho. The radius of cylindrical volume is r. The charge of Q revolves around the cylinder in a circular path. The kinetic energy of the particle will be equal to how much? देखो जब इस circular path में मूव कर रहा है तो force will be equal to your, कितना हो जाएगा, mv square divided by r. When a charged particle is an electric field, F क्या हो जाएगा, E into Q, that is equals to m into v square divided by r.
A long cylindrical volume contains a uniformly distributed charge density rho. The radius of the cylinder of volume is r. A charge particle q revolves around the cylinder in a circular path. The kinetic energy पूछ रहा है. तो electric field in the volume charge density का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, याद है आपको? E is equals to rho into r divided by 2 times of epsilon naught. ये हो गया rho into r divided by 2 times of epsilon naught into charge. So charge of the particle में दे रखा है आंसर, so I'll keep that one as q. That is equals to your m into your v square divided by r. ठीक है, divided by r. Clear है? और क्या बोला है, चार्ज अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ. ठीक है, एंड स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल दे रखा है बेटा, मैं यहाँ पर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल ले रहा हूँ, तो ये बन जाएगा रो इंटू आर डिवाइड इंटू कैपिटल आर ले रहा हूँ, डिवाइड इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर. तो काइनेटिक एनर्जी होना है मुझे, तो यार इधर चले जाएगा, तो रो इंटू आर स्क्वायर इंटू रो डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर. So it is equals to half into mv square की वैल्यू कितनी है बेटा, रो into r square into रो divided by 2 times of epsilon. ये 2 ये 4 बन जाएगा, सॉरी ये 4 बन जाएगा, तो रो into r square into half m, ये क्या है बेटा, रो into r square into चार्ज q है ना, तो ये हो जाएगा चार्ज q divided by 4 times of epsilon naught. है क्या कहीं पर, रो आर स्क्वायर इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ epsilon naught. ठीक है ना, चलो नेक्स्ट वन देखो. एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एज, यानी ये दे रखा है पावर, this one is given as of your power. What will be the peak magnetic field at 4 meter distance produced by the radiations coming from this bulb? Consider the bulb as a point source with 3.5 efficiency. Intensity का फॉर्मूला लगा लीजिए, intensity is equals to power by area. So इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में लिखते हैं फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का चैप्टर, b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट इनटू c. ठीक है ना, इंटेंसिटी दे रखा है प्रॉब्लम में ऑलरेडी आपको कितना, 200 is equals to how much for me? Intensity, consider the bulb as of a point source, the efficiency will be equal to how much for me? And intensity is equals to this one, power divided by area. area की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई इंटू और आर स्क्वायर. इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, एक मिनट बेटा, इंटू सी है ना, डिवाइडेड बाय सी इंटेंसिटी. तो अपने को निकालना क्या था, मैग्नेटिक फील्ड. सो पावर की वैल्यू दे रखी है 200 डिवाइडेड बाई एरिया मतलब 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर. कितनी दूरी पे है, 4 मीटर, यानी ये हो जाएगा 4 स्क्वायर लिखना है. दैट इज इक्वल्स टू योर कितना, 3.5% एफिशिएंसी हो जाएगा, 3.5 डिवाइडेड बाई से 100 कर दो, दैट इज इक्वल्स टू बी नॉट स्क्वायर इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू म्यू नॉट. म्यू नॉट की वैल्यू आपको मालूम है, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है बेटा, याद है किसी को, म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10 पावर -7 होती है, और सी की वैल्यू 3 to 10 to the power of 8 मीटर पर सेकंड होती है. अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से तो आपको बी नॉट की वैल्यू निकल जाएगी. एम डी कैलकुलेशन करिए, इतना तो आपको करना ही है. नेक्स्ट वन, the light of two different frequencies whose photons have the energies 3.8 electron volt and 1.4 electron volt respectively illuminated a metallic surface whose work function is 0.06 electron volt successfully. The ratio of maximum speeds of emitted electrons for the two frequencies will be equal to how much? This is a direct photoelectric effect का question है बेटा. Energy of the photon will be equal to work function plus of your kinetic energy, half into m into v square. तो आप इसको स्टेटमेंट के हिसाब से लगा दीजिए. फर्स्ट वन का एनर्जी 3.8 है, दैट इज इक्वल्स वर्क फंक्शन इज 0.6 प्लस दिस वन इज हाफ इनटू m इनटू v1 स्क्वायर. और सेकंड वन के लिए कितना है, बेसिकली 1.4 इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन सेम है, तो 0.6 दैट इज इक्वल्स टू हाफ, सॉरी प्लस दिस विल बी इक्वल टू हाफ इनटू v2 स्क्वायर. अब इन दोनों को अगर मैं सिंपलीफाई कर रहा हूं तो आई विल बी गेटिंग राइट नाउ v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3.2 डिवाइडेड बाय ओवर 0.8. ठीक है ना, सो इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, दिस इज 4 पाई और 1, तो v1 डिवाइडेड बाय v2 विल बी इक्वल टू 2 by 1. सो दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन. The ratio of two light beams of intensity is 9/4 are allowed to interfere. The ratio of maximum to minimum. ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, मुझे करने की जरूरत नहीं है. I max divided by your I minimum.
will be equal to root of your I1 plus root of your I2 divided by root of your I1 minus root of your I2 का होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर निकल जाएगा आप लोग. ठीक है ना. नेक्स्ट वन, इन बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एक थियरी क्वेश्चन है, आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए. Question number 21. A body has been projected from the ground at an angle of 45 degrees with the horizontal. Its velocity after 2 seconds is 20 meter per second. The maximum height reached by the body during the motion will be equal to how much? It is asking the maximum height reached by the body. Maximum height के लिए फॉर्मूला पर देखो, body projected from the ground at an angle of कितना 45 degrees. Okay. Theta is equals to 45 degrees with horizontal. Its velocity after 2 seconds. 2 seconds के बाद उसकी velocity कितनी है? 2 meter. Maximum height reached by the body during its motion will be equal to how much will be? तो पहले क्या करो, velocity of your particle along y-axis निकाल. Vy is equals to uy minus 2 into g, that is nothing but 20. ठीक है ना? Am I clear? So this is the value of Vy, and those both of them are perpendicular to each other. So I can write this one as of your velocity से कितना दे रखा है 20. Its velocity after 2 seconds is 20 meter per second, and under root of your Vy square plus Vx square is equals to 20, and under root of your ये हो गया Ux minus of 20 whole square plus of your Ux square is equals to 20. तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, u this is 2 times of ux square minus 40 times of your ux will be equal to 0. अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ux is equals to 20. Velocity at highest position is of your 20 meter per second. Then maximum height reached by the particle will be equal to how much? H max is equals to u square divided by 2g. So it is 20 into 20 divided by 2 into your 10. So it is nothing but equal to 20. अब 22 तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही है. 23rd वाला कर सकते हैं अपन, एंड 24 वाला जी एक बार देख लीजिए. 25th वन इज ऑल्सो डायरेक्ट क्वेश्चन. 26th वाला इज ऑल्सो रोलिंग मोशन का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हैं. एंड 27, 28 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है बेटा, ठीक ठाक है पेपर, आराम से कर सकते हैं. 30 वेरी कंफर्टेबल पेपर है, एक बार ये ट्राई कर लीजिए बेटा. ठीक है ना. अभी पूरा तो मैं नहीं कर सकता, मैंने क्वेश्चन पेपर आप लोग को बता दिया. एक बार पास करके आप लोग इसके थोड़े क्वेश्चंस कर लीजिए. ठीक है, चलो टेक केयर.